She got an internship at Microsoft, okay? Never ever have photo in your resume. Okay. Best memory. My Haryanvi dance performance at Microsoft Hyderabad campus. Salary. Per annum. We're here with Priyanka. She's a Microsoft intern. Let's have a conversation while walking. And let's break down how she got the internship at Microsoft. Yeah, she got an internship at Microsoft, okay? Tell me what was the process, how you got into it, in short, yeah. Process was very simple. It was an on-campus opportunity. Company approached my college that we want to hire interns. Then college ने students को apply कराया. We just applied on the link and उन्होंने eligibility criteria बता दिया था that computer science and related branches are eligible. हमारे college में mechanical भी eligible थी and 7 above CGPA होना चाहिए and no backlogs. So this was the application process. ठीक है. And then tell me application में how did you get noticed by the recruiters? Actually on campus में there is मतलब उन्होंने resume मांगा था हम लोगों का. So there must be दूसरे लोग भी तो बहुत आएंगे ना. Yes. How did you stand out? Tell me that. So resume is one of the things. लेकिन उसके साथ Microsoft में एक coding test भी होता है. Okay. So based on the scores of that coding test, वो shortlist निकालते हैं for interviews. वो Okay. सबका interview नहीं लेते हैं जो coding test और resume shortlisting में होते हैं. Then उनका ही interview round वो कराते हैं. There were 2 interview rounds. Tell me resume आपने कैसे अच्छा बनाया so that recruiters notice you और फिर how should these people do it to stand out to people recruiting? Okay, there is some standard format to make your resume. Always use overleaf to build your resume. थोड़ा professional. Never ever have photo in your resume. Okay. Okay. And also आपके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपके रिज्यूमे में हाईलाइट करें कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव एंड हैकेथॉन्स एंड ऑल द स्टफ. और अपने रिज्यूमे को ऐसे दिखाओ रिक्रूटर को लगे कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर अस. इसको तो रिजेक्ट नहीं ही करना है. That's the thing. So be an asset for the recruiter, be a resource, and Yes. they'll hire you that way. Let's break down जो second round का था. It was supposed to be an interview round. Tell us how your experience in it was. Basically second round depends on interviewer. It is AA round as appropriate. Okay. अब वो इंटरव्यूअर की मर्जी है वो उसको किस वे में ले जाना चाहते हैं. दे वांट इट टू बी टेक्निकल, दे वांट इट टू बी HR. मेरे केस में वो टेक्निकल ही था. मुझसे एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा एंड देन जो मेरे CSIT के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे थे. बट HR राउंड अगर वो लेंगे देन वो आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं उनको टेस्ट करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट सेकेंड राउंड. So something that ये वाला round हर किसी के साथ होगा mostly. So something that you guys should like look into is language proficiency. Learn English, learn the other language maybe whichever one you'll be speaking in. उसमें अच्छे से बोलो, otherwise it's a big turn off for the recruiter. And then be really good at the stuff you do. तो मतलब basic समझ जाओ उसके and be ready to derive the good stuff from there. So this is how you can actually crack interviews. Any other point you want to add? योर गोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ इंटरव्यू शुड बी कि आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पा रहे हो कि आपको मुझे लेके ही जाना है. आपको खुद को इतना बेस्ट दिखाना है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है. तो देयर शुड बी नो पॉइंट कि उनको लगे कि मुझे इस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देना चाहिए. नो. And don't be an imposter. Yeah. Be actually good at the stuff that you do. Yes. Speaking to Priyanka here, I get the vibe she's very confident. She did say that herself as well. तो फिर but then कहीं ना कहीं तो डाउट आया ही होगा आपके दिमाग में कि maybe I'm not good enough. How did you deal with that stuff or how for the interview mainly when speaking to people that comes? वो बताइए. ओके. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ. सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो एंड पार्टिसिपेट इन डिबेटिंग That's कॉम्पिटिशन्स. nice. लाइक मतलब आपकी स्पीकिंग स्किल्स जिन चीज़ों से बढ़ रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करो. इन माई कॉलेज देर इज़ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल. तो हम स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स डायरेक्टली HR से कांटेक्ट कर रहे होते हैं. तो उनसे बात करके हमें बोलने का तरीका लाइक हाउ शुड वी स्पीक प्रोफेशनली टू समवन एंड कॉन्फिडेंस बहुत आता है. लाइक बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हमें HR को कन्विंस करना होता है एंड HR हमें कन्विंस कर रहे होते हैं. सो फोकस मेनली ऑन योर स्किल्स एंड ऑल्सो किसी के भी सामने ऐसे हेजिटेट मत करो. ट्रीट एवरीवन एज योर फ्रेंड. अगर आप सामने वाले को अपना फ्रेंड समझ के बात करो. Everybody wants to help, that's what she's saying. और just try करो. And then जो placement cell की बात की, every DU college has one. Yes. जाओ talk. If you want to get into big companies, mainly ये वाला काम करो कि go talk to them, get into the society. Yes. It'll help you out. Yes. Priyanka was an intern at Microsoft. Let's ask her about her experience in the rapid fire round. Okay. So what was your best memory? My Haryanvi dance performance at Microsoft Hyderabad campus. Okay, describe Microsoft in one word. Family. That's nice. And what was the most used app in the internship? Co-pilot forever. That's AI. And what didn't you expect in Microsoft before working? That I'm going to get such a good experience in those 8 weeks. Okay, that's nice. Okay, let's get into the gritty stuff. Stipend क्या था आपका?
lakhs per month. Okay, that's great if you guys can land it. And pretty much also go for अगर it. आप relocate कर रहे हो, like I am from Haryana and I had to go to Hyderabad, तो मुझे relocation के लिए भी था. Okay, so there's an amount for relocation as well. And what are the chances that you land the job now? Are you confident? Yes, the work I have done and the experience I had and the kind of interview went for me, it was great. So hoping for a PPO. Okay. PPO is pre-placement offer. Yeah, that's great. And then उसमें कितना रहता है salary, everything? if you It's can- around lakhs per annum is the CTC for Microsoft. Okay, so you get paid very well. And then Hopefully. any advice for students? Well, you believe you'll probably get it. I'm pretty confident she'll get it. So tell us they can do anything during the internship to actually land the job. Yes, always, because internship सिर्फ 2 महीने की है. Try to give your best. अगर ओवर टाइम करना चाहते हो करो, because वो 2 महीने ही आपका जज करेंगे. एंड प्रिपेयर फॉर योर कोडिंग एज वेल, क्योंकि फाइनल राउंड में वहाँ भी वो आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे. तो अपनी कोडिंग बिल्कुल मत छोड़ना इंटर्नशिप के साथ. So in general, अगर आप काम कर रहे हो during the internship and you want to land a full-time job, be proactive, Yes. do more stuff, and then prove to them that you're an asset for their team and they'll hire you. Yes. So thanks a lot, Priyanka, Thank you. for joining us, and yeah, subscribe to her channel as well. Bye.